आज इस बेबस बेख्तियार बेचारी पार्लियामेंट में एक अहम इशू डिस्कस किया जा रहा है। अवाम के लिए जो सबसे अहम इशू है वो डिस्कस हो रहा है। महंगाई और मुआशी सूरत-ए-हाल पर डिबेट हो रहा है। And we can see by the empty desks and the empty seats on the government side कि वो कितना अहमियत देते हैं इस अहम इशू को, कितने अहमियत देते हैं अवाम के मसाइल को, कि उन्होंने अपने तो सीनियर मिनिस्टर्स भी नहीं भेजे। यहाँ तो हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है, साइंस का वजीर है, पोस्ट ऑफिस का वजीर है, मगर असल वजीर तो नहीं है, छोटे वजीर। वजीर होता है बिलावल साहब, वजीर होता है जब जी जनाब स्पीकर, हमारा उम्मीद है कि एक दिन ये हाउस अपना वजीरे फाइनेंस मिनिस्टर को देखेगा, अपना फाइनेंस मिनिस्टर से सुनेगा और सवाल भी पूछ सकेंगे डायरेक्टली। महंगाई ने इस मुल्क के अवाम का जीना हराम कर दिया है मिस्टर स्पीकर। हर तबका परेशान है कि जब से ये हुकूमत आया है तब से अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। जी प्लीज। ये हुकूमत माने या ना माने, सबको नजर आ रहा है कि when this government took over, इन्फ्लेशन था, महंगाई था, और अब बहुत बढ़ गया है। When this government took over, they had to deal with a floundering economy, and they've turned it into a sinking economy, Mr. Speaker. जब ये हुकूमत आई तो बेरोजगारी था, अब बहुत बढ़ गई है। जब ये हुकूमत आए गुर्बत था, अब बहुत बढ़ गई है। ये एक हकीकत है, ये सियासी बयानबाजी नहीं है। These are the facts, Mr. Speaker. These are the facts. हुकूमत के अपने इदारे क्या कह रहे हैं? ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है? एफबीआर क्या कह रहा है? ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हुकूमती इदारा कह रहा है कि पिछले दिहाई में, इन द लास्ट 10 years, महंगाई इतनी तेजी से नहीं भरी है जिस तेजी से पिछले एक साल में भरी है। जनवरी 2019 में महंगाई की शरह 6.2% थी और अब 14.5% तक पहुंच गई है। और फूड इन्फ्लेशन, खुराक की महंगाई ने बहुत भरी है। 1.6% से लेकर 1.6% था और अब फूड इन्फ्लेशन 25% तक पहुंच गई है। सबसे हैरानकुन बात जनाब स्पीकर, सबसे हैरानकुन बात, जो पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, वो खुराक के आइटम्स जो जल्दी खराब होते हैं, उनमें महंगाई 78% का हुआ है। इसका क्या मतलब है? आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? दालों की कीमत में 83% तक बढ़ गया है। प्याज 125% का इजाफा हुआ है। टमाटर 158% का इजाफा हुआ है। आलू 87% का इजाफा हुआ है। ये तो मेरे फिगर्स नहीं है जनाब स्पीकर, ये आपके अपने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स है। It's worth noting, Janabi Speaker, the discrepancy in the inflation, the general inflation rate and the inflation faced by the rural population. Where the general inflation rate is at 14%, the rural population is facing an inflationary rate of 16%. जहाँ general inflation perishable food items के लिए 79% है, rural population के लिए 91% है। और इस सब के ऊपर आपने गैस चार्जेस में 55% का इजाफा किया है, मोटर फ्यूल में 76% का इजाफा किया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में 14% का इजाफा किया है। हमने सब अपने
کانسٹیٹیوئنسیز میں جانا ہے جناب اسپیکر, اپنے عوام کو جواب دینے ہیں. ہمارے عوام ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے بچے کو کھانا کھلائے یا اپنا بجلی کا بل اور اپنا گیس کا بل بھر لے. It is beyond me, I don't understand how a majority of members of this house face their constituents. عوامی نمائندے اس معاشی قتل پہ خاموش نہیں رہ سکتے. صرف وہ لوگ جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں, جو کسی اور طریقے سے آئے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے, عوام کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور معیشت ترقی کر رہی ہے, معیشت صحیح سمت پہ جا رہی ہے. یہ ہمارا فیکٹس نہیں ہے, ہمارا سٹیٹسٹکس نہیں ہے, ہمارے نمبرز نہیں ہیں, یہ حکومت کے اپنے ادارے کے نمبرز ہیں. اور اگر یہ مہنگائی, یہ ظلم, اگر یہ ظلم عوام کا معاشی قتل نہیں ہے تو اور کیا ہے جناب اسپیکر؟ ہمیں سب یاد ہے جب عمران خان صاحب کہتا تھا کہ جب وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے. جناب اسپیکر, جب آپ کا حکومت نااہل ہوتا ہے, نالائق ہوتا ہے, سلیکٹڈ ہوتا ہے, عوام کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں, تو پھر عوام کا درد کا احساس بھی نہیں ہوتا. آئی ایم ایف کے سامنے جھک جاتے ہیں, اپنے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ سودا بازی کرتے ہیں, پاکستان کے معاشی خود مختاری پہ سودا بازی کرتے ہیں, تو پھر مہنگائی بڑھتی ہے جیسے آج بڑھ رہی ہے, جیسے آپ کے اپنا بیورو آف اسٹیٹسٹک کہہ رہی ہے کہ تاریخی طور پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. وزیر اعظم کو ہمیں بتانا چاہیے کہ اس کا کون سا کرپشن کی وجہ سے اتنا اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں. یا ہمارا بات مان لے کہ وہ نااہل ہے, نالائق ہے, سلیکٹڈ ہے, جو بھی ہے, گھر جانا پڑے گا اور عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. جناب اسپیکر, ہمارا وزیر اعظم کہتا تھا کہ وہ قرض نہیں لے گا, قرض لینے سے پہلے وہ خودکشی کر دے گا. اور اب پاکستان کا اپنا اسٹیٹ بینک کیا کہتا ہے, عمران کا اپنا اسٹیٹ بینک کیا کہتا ہے کہ پچھلے 15 مہینوں میں حکومت نے 11,000 ارب روپیہ کا قرض لیا ہے. 11,000 ارب روپیہ. اس حکومت ہمیشہ ماضی کی بات کرتی ہے جناب اسپیکر. پچھلے 61 ایئرز میں 1947 سے لے کے 2008 تک 6,000 ارب روپیہ لیا گیا تھا, اور پچھلے 15 مہینوں میں 11,000 ارب روپیہ لیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے لے کے 2013 تک اندازاً آن ایوریج ہم نے ہر دن 5 ارب روپے لیا تھا. نون لیگ کے دور میں 2013 سے لے کے 2018 تک ہم نے اندازاً ہر دن 8 ارب روپیہ کا لون لیا تھا. لیکن اب ان پچھلے مہینوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہم نے ہر دن ایوری ڈے 25 بلین روپیز کا قرض لے رہے ہیں جناب اسپیکر. یہ اپوزیشن کے فگرز تو نہیں ہیں, یہ حکومت کے اپنے رپورٹس, حکومت کے اپنے ادارے کے فگرز ہیں. عمران خان نے تو کہا تھا کہ وہ خودکشی کر دے گا. جناب اسپیکر, خودکشی ہمارا مطالبہ نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ مان لو کہ آپ غلط تھے, آپ غلط ہو, عوام کو ریلیف دو ورنہ گھر جانا پڑے گا. جناب اسپیکر, ہمیں تو یاد ہے کہ وزیر اعظم عمران کہتا تھا کہ پاکستانی عوام اس لیے ٹیکس نہیں دیتے کہ ہمارا وزیر اعظم ایماندار نہیں ہے, اور جب ایماندار عمران وزیر اعظم بنے گا تو پھر پاکستان کے عوام ٹیکس دینا شروع کر دے گا. اب حکومت کا اپنا ادارہ, حکومت کا اپنا ایف پی آر کیا کہہ رہا ہے
کہ حکومت اپنا ہی رکھے ہوئے ٹیکس ٹارگٹس بھی پورا نہیں کر رہے. 7 مہینوں میں تقریباً 400 ارب کا ٹیکس شارٹ فال ہے. اور اب تو پھر the Prime Minister should tell us کہ کیا ہمارا وزیر اعظم ایماندار نہیں ہے, حکومت کرپٹ ہے اور اس لیے ٹیکس وصول نہیں ہو رہا ہے, یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہ اہل ہے, نہ لائق ہے, سلیکٹڈ ہے, اس لیے ٹیکس وصول نہیں ہو رہا ہے. جناب اسپیکر, میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا, میں نے پہلے دن آپ کے سامنے کہا تھا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے. ان کے معاشی پالیسیز ہمارا عوام کا معاشی قتل ہے. ان کا بجٹ عوامی بجٹ نہیں, ان کا بجٹ تو پاکستانی بجٹ نہیں, ان کا بجٹ پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے, اور ہمیں یہ نامنظور ہے. اس ملک کے عوام, پاکستان کے عوام یہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ نہیں مانتے ہیں. The IMF deal is a bad deal. It is a bad deal for Pakistan. It is a bad deal for the people of Pakistan. It is a poor deal. It is a poor deal negotiated poorly by those who have compromised on the rights of the people of Pakistan and compromised on the economic sovereignty of Pakistan. It's a complete and utter capitulation to the IMF based on unrealistic targets and a lack of understanding about the way the Pakistani economy actually works, Janab Speaker. Let's start with the noble objective of documenting the Pakistani economy. A majority of us would support such an initiative from any government, for the entire world is moving towards a documented economy and Pakistan must do the same. The Pakistani economy is largely undocumented, Janab Speaker. And where the government has gone wrong is that they have decided to document the entire economy all in one go by hook or by crook. No other policy has strangled our economy more than this one stubborn decision to document all at once. It is once again driven by unrealistic targets, a tendency to treat non-taxpayers as criminals that need to be punished, rather than understand that non-taxpayers are hard-working Pakistanis that make up a majority of our economy, which still remains undocumented. It is not because a majority of our citizens are thieves or crooks or corrupt. It is because they do not trust our failing tax system. Instead of taking conducive measures, instead of lowering tax rates, incentivizing and coaxing the hard-working people of Pakistan into the tax net, bringing about tax reform to fix our broken system and addressing the actual structural issues, allowing for a generous and realistic time frame for non-taxpayers to be brought into our tax net, documenting the Pakistani economy slowly and surely. This government is hiking up taxes, forcing everyone to shop and trade with CNIC cards overnight, relying on institutions such as the FIA, NAB, and FPR to harass the working people of Pakistan, which has resulted in the failure of this policy of documenting our economy, and has also resulted in the strangling the life out of Pakistan's economy. Janab Speaker, the question everyone is asking is کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ حکومت مہنگائی کے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہ حکومت غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہ حکومت بے روزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ The answer, Janab Speaker, is nothing. کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا جو سابق فائنانس منسٹر بھی رہا ہے, اکانومسٹ بھی رہا ہے, مگر عمران خود جب اپوزیشن میں تھا ڈاکٹر حفیظ پاشا کا فگرز کو دہراتا تھا. آج وہی ڈاکٹر حفیظ پاشا کہہ رہا ہے کہ because of the government's policies, because of the government's economic policies,
1.2 million jobs will be lost in this financial year alone. 18 million more people will slip into poverty. The government has put the citizens of Pakistan in this situation, Janaab Speaker, और अब पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की गरीब अवाम को लावारिस छोड़ दिया है. Instead of expanding the Benazir Income Support Program, or better yet, coming up with a new, original, revolutionary program to help the poor people of Pakistan. इनका अना की वजह से जनाब स्पीकर सियासी फायदा के लिए और भुगजे भुट्टो के लिए ये हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सैबोटेज कर रहे हैं. Benazir Income Support Program is this country's first and only social safety net for the poorest of the poor Pakistanis. A project conceived of by Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto to help the poor people of this country. वही गरीब अवाम जिनके लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जदोजहद की, वही गरीब अवाम जिनके लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल की. ये प्रोग्राम पाकिस्तान का सबसे कामयाब प्रोग्राम है जिसका दुनिया भर में पहचान है. लेकिन इमरान जैसे सियासतदानों जिनका पूरा का पूरा सियासत, पूरी की पूरी सियासत किसी न किसी ISI चीफ का मेहरबानी है, वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि पाकिस्तान का वो पहली खातून वजीर आजम. जनाब स्पीकर, ये जो आप कह रहे हैं ना, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ. जनाब स्पीकर, हिस्ट्री आपके सामने है. अगर आप चाहे मैं वो ISI चीफ का बयान भी आपके सामने पेश कर सकता हूँ, इस हुकूमत के सामने भी पेश कर सकता हूँ, मगर अभी मैं महंगाई पे फोकस करना चाहता हूँ. अब टॉपिक पे आ जाइए. जल्दी खत्म करूँ. ये कैसे बर्दाश्त करे जनाब स्पीकर कि वो खातून वजीर आजम जिनकी पूरी की पूरी सियासत अवाम की ताकत की वजह से थी, वो सियासी कायद जिसने अपनी अवाम के लिए शहादत कबूल की, जिसकी नाम आज भी पूरी दुनिया में रोशन है, एक इमरान जैसा छोटा आदमी ये कैसा बर्दाश्त करे कि पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल. ये जो आप देखें, वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, इसको आप इस तरह नहीं बोल सकते. इसको मैं एक्सपेंज करता हूँ जी. ये एक्सपेंज करता हूँ मैं इसको. जनाब स्पीकर, आपने मईशत पे बात नहीं करना. मैं एक्सपेंज करता हूँ जी. महंगाई, अवाम की मुआशी सूरत हाल देखिए ये क्या कर रहे हैं. ये कहेंगे कि हम महंगाई पे बात नहीं करेंगे. देखिए एक मिनट, आप तशरीफ रखें प्लीज. वो कैसे बर्दाश्त करे? देखिए बिलाल साहब, एक बात मैं सबको कहता हूँ, वो इस मुल्क का, एक मिनट आप मैं बात करता हूँ. जनाब स्पीकर, वो इस मुल्क का पोस्ट ऑफिस वाला बात करेगा, वो इस मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म है, इस हाउस ने उसको वोट दिया है. इसके साथ इस किस्म के अल्फाज जो नामुनासिब है. हमारा बहुत बड़ा आदमी जो वजीर आजम है, इतना बड़ा आदमी है कि एक तस्वीर बर्दाश्त नहीं होता, एक नाम बर्दाश्त नहीं होता. वो हमारा बड़ा आदमी वाला वज़ीर आज़म, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? तशरीफ रखे प्लीज. वो कैसे बर्दाश्त करेगा आप तशरीफ कि बीवी शहीद के अपने मंसूबे पे तशरीफ रखे. मैं बात शहीद करता का हूँ. नाम हो, शहीद का तस्वीर हो, अली आप प्लीज, मैं और जो शर्मनाक बात प्लीज आप तशरीफ रखे. एक मिनट, जो शर्मनाक बात है, एक मिनट, मैं ये इजलास खत्म कर दूंगा. मैं अली अमीन आप बैठ जाए, मैं बात करता हूँ. अली अमीन आप बैठ जाए. हमारा वजीर आजम है. अली अमीन आप इनको कंट्रोल करें. हाँ, अली आप बैठ जाए जी. मैं सर आप उनको कंट्रोल करें. तशरीफ रखे जी, तशरीफ रखे अपनी जगह, सीटों पे तशरीफ रखे. दोनों तरफ से तशरीफ रखे जी, दोनों तरफ से तशरीफ रखे. मैं देखें
जनाब स्पीकर, मैं अपना तकरीर तो मुकम्मल करूंगा, मैं एक बिलावल साहब एक बहुत जल्दी मुकम्मल होने वाला है। करूं, आप जब भी बात करें, जो भी इस हाउस का वो प्राइम मिनिस्टर है, आप जब भी किसी के बारे में बात करें, कम से कम उसका लिहाज करें। मैंने मान वो इस लिया हाउस का जो है, मुंतखब मेंबर मैं है। मानता हूँ बड़ा ही होगा, बड़ा वजीर आजम होगा, लेकिन आपका काम नहीं है, आप स्पीकर हो इस हाउस का, मैं स्पीकर- आपका काम नहीं होता वजीर आजम को दिफा करना। कितना बड़ा है, कितना छोटा है हमारा पोस्टल ऑफिस का वजीर, तो हमें बैठाएगा, मुझे जवाब तो देगा कि जी, कितना बड़ा आदमी हमारा वजीर आजम प्लीज। होगा। लेकिन इन वज़रा की Wind up करें जी, रिएक्शन प्लीज। से, इन वज़रा की रिएक्शन से Wind up करें जी, प्लीज। अंदाजा आप- हो रहा है मुझे कि छोटा होगा। Wind up करें, इनका प्लीज। रिएक्शन की वजह से वाइंड अप करें प्लीज। कुछ ये नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी इस हाउस का मेंबर है, सारे काबिल कदर है, काबिल एहतराम है, एक दूसरे के बारे में रिस्पेक्ट के अल्फाज करने चाहिए। आप तनकीद करें बेशक, लेकिन तनकीद भी मुनासिब है। प्लीज वाइंड अप प्लीज। जनाब स्पीकर, जो सबसे शर्मनाक बात है कि जो सिंध के सियासी टीमों का टोला आजकल इमरान के साथ उनके इत्तेहादी है, इनमें से आज जो हुकूमत के वजीर है या हुकूमत के इत्तेहादी मेंबर्स है, इनके ऊपर तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खुद इतना एहसान है। किसी की बहन को सेनेटर बनाने की कोशिश की या नहीं? किसी को तो सूबाई स्पीकर नहीं बनाई थी, और फिर बाकी को MNA, NPA, वजीर, शजीर। वाइंड अप आज वाइंड अप तो मैंने इकोनॉमी पे बात करना है जनाब स्पीकर। आज वही लोग इमरान के साथ दे रहे हैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीर में मिटाने में, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम हटाने में, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 9 लाख गरीब अवाम को हटाने में। इन मुआशी सूरत हाल में जो भी सियासतदान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 9 लाख लोग हटा सकते हैं, उनको तो तारीख याद रखेगा जनाब स्पीकर। और आज ये शर्मनाक हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सैबोटाज कर रहे हैं, और एहसास के नाम पे शहीदों, आप एहसास के नाम पे शहीदों के काम का क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। जब इनका गरीब का कोई एहसास नहीं होता, शहीदों का कोई कदर नहीं होता, तो फिर एहसास के नाम पे मजाक किए जा रहे हैं। मिस्टर स्पीकर, जनाब स्पीकर, यह हुकूमत हमारे अवाम के, हमारे गरीब, जनाब स्पीकर, यह हुकूमत हमारे अवाम के, हमारे गरीब अवाम के मुआशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। पहले दिन से जब ये PT-IMF डील आई, हमने कहा था कि ये अवाम के मुआशी हुकूक पे हमला है। ये किस किस्म का IMF डील है? ये किस किस्म के IMF डील है जहां IMF के लोग आते हैं, IMF के नाम से नुमाइंदे से मुज़ाकरात करते हैं और पाकिस्तान के अवाम के लिए मुआशी फैसले लेते हैं। हुकूमत का काम होता है कि वो ये एक रूल में पढ़ता हूं बिलावल साहब आपके लिए, ये 284 expansion of words from जनाब debate. स्पीकर, If the speaker is पाकिस्तान of के the अवाम, opinion that words have been used in debates which are मैं मानता हूं democratic, आप मानते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि जो आप करें तो काइंडली इस रूल्स का ख्याल रखें। मुझे नहीं पता था जनाब स्पीकर कि छोटा या बड़ा में कोई पार्लियामान प्रिविलेज अपसेट हो। अगर आपका ये फैसला है, हम आपका चेयर का इज्जत भी करते हैं, Please, no cross talk. एहतराम No भी cross talk, करते please. हैं, और आज के No बाद cross छोटा talk, और please. बड़ा का जिक्र ही नहीं करेंगे। प्लीज मगर जनाब स्पीकर, अगर आपका इजाजत हो प्लीज
تو حکومت کا کام ہوتا ہے عوام کی نمائندہ ہونا, عوام کا نمائندہ بننا, عوام کی نمائندگی کرنا, عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا. IMF جیسے ادارے سے اگر آپ نے نیگوشیشنز کرنا ہے, بات کرنا ہے, تو پھر آپ کا ذمہ داری ہوتا ہے, حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ عوام کے معاشی حقوق کا تحفظ کرے, پاکستان کی معاشی خود مختاری کا تحفظ کرے. یہ حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے. لیکن جب حکومت عوام کے نمائندے سے نہیں بنے ہوتے, جب وہ سیاست میں نالائق اور نااہل ہے, حکومت کرنے میں نالائق اور نااہل ہے, معیشت چلانے میں نالائق اور نااہل ہے, تو پھر نیگوشیشنز کرنے میں بھی نالائق اور نااہل ہوتے ہیں. اور ہم ان کی وجہ سے ہم آج سب یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کو بھگت رہے ہیں. تھینک یو. اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کے بعد پاکستان کی معیشت پاکستان کی نہیں رہی. اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کے بعد پاکستان کی معیشت پاکستان کی عوام کی معیشت نہیں رہی. اب we have an economy of the IMF, for the IMF and by the IMF, Mr. Speaker. We needed an Awami Hukumat. We needed an Awami Hukumat to negotiate in the interests of Pakistan. We needed an Awami Hukumat to negotiate in the economic interests of the people of Pakistan and who could protect the interests of the poor people of Pakistan. We got a selected Hukumat, a selected government who've put the entire burden on the poor people of Pakistan. They have sold the economic interests of Pakistan and compromised on the economic integrity of Pakistan. Janab Speaker, jab hum اس حکومت کے معاشی پالیسیز کی بات کرتے ہیں, چلاتا ہوں نا, مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوتا ہے. اور پلیز ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں. The government is obsessed. The government is obsessed, Janab Speaker, with the current accounts deficit. آپ نے ابھی ہمارا اسٹیٹ وزیر کو سنا کہ وہ current account deficit کا ذکر کر رہا تھا. They're obsessed with the current account deficit and reducing the current account deficit only because it allows them to pay back the IMF. But reducing the current account deficit does not put food in the stomachs of the people of Pakistan, yeah, paisa in the jab of the people of Pakistan. This formula of increasing interest rates, thank you, and that, no, sir, they're बहुत important है. IMF में मैंने बात करना है. टाइम भी शॉर्ट है तो प्लीज आप पॉइंट अप करें. This formula of increasing interest rates that has brought our economy to a halt only creates massive unemployment and has no positive effect. Janab Speaker, the entire might of the Pakistani economy, our economic policy, our fiscal policy, our monetary policy, our obsession with the current accounts deficit, our obsession with the documentation of the entire economy by force, the absurd